Do CA students get very tedious or number crunching job while going for industrial training? Does CA student lose their grip from the core CA field once they opt for industrial training? Do CA students get irrelevant or negligible exposure while opting for industrial training? Well, many of these similar questions we are going to answer in this video, and I'm going to share with you what was my experience throughout the industrial training. So, let's get started. Now, my experience during my industrial training period was beyond I could ever imagine. मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि आर्टिकलशिप में मेरे को ऐसा एक्सपोजर मिलेगा. So I would say कि in any company or any articleship firm, there is one primary benefits that you get which is on the job, जो कि आपको जॉब करते टाइम आपको कोई पर्टिकुलर टास्क करते टाइम सीखने को मिलता है, एंड देर आर सेकेंडरी बेनिफिट्स विच डिपेंड्स ऑन योर क्यूरियोसिटी टू लर्न. सो प्राइमरी बेनिफिट्स क्या थे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, क्या होते हैं जनरली कंपनीज में, एंड व्हाट वुड बी द सेकेंडरी बेनिफिट्स दैट यू माइट गेट ड्यूरिंग योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सबसे पहले प्राइमरी बेनिफिट्स. सो आई वुड से कि प्राइमरी बेनिफिट ऑफ एनी पर्टिकुलर जॉब रोल डिपेंड्स ऑब्वियसली ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन. कई कई जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसा होता है कि यू जस्ट हैव टू वर्क, कि एक्सेल में से एक फाइल निकली है, उस फाइल में आपको काम करना है, यू हैव टू मेक सम मॉडिफिकेशंस, यू हैव टू मेक सम कैलकुलेशंस, and you have to send it across to other teams. So these are middle offices roles that you might see people who are working in bigger brands like JP Morgan, Goldman Sachs doing. And another thing, another job role would be you are working in a finance team of a particular company, which is interesting if you love the creation of a financial statement, and you love how a journal entry flows through the trial balance to balance sheet, PNL to PNL, balance sheet, cash flows, or double entry system is something that you might interest in. Another job role would be that you are a part of a risk team, and you are figuring out certain parameters कि कोई particular transaction उस risk parameters में meet हो रही है या नहीं हो रही. And apart from that, you might be in a compliance team in a particular financial servicing firm, which you will love if you are fond of legal things like Companies Act, SEBI regulations, and similar other laws. And another type of roles would be front end IB roles, yeah, private equity. I've seen people working in Motilal Oswal and ICICI Securities, where you are actually a part of big deals. And it is very rare to find those opportunities, like for people who are 19 or 20 who just cleared their 1.5 years of articleship, and you're getting to sit with the management is beyond anything else. Like if you get into IB, you are part of a deal, like end to end deals. You are constantly meeting with management. You are constantly meeting with the clients, with the funds जो कि पैसा invest कर रहे हैं, is beyond anything that you could ever imagine. So it is front end IB roles or equity research roles also you'll get similar exposure. So ये सारे roles है where primary benefit are much broader. Now let's talk to what would be the secondary benefits. Secondary benefits depends wholly and solely on your curiosity to learn, but you learn beyond the job or beyond the task that you have given. Like in equity research, trainees are supposed to do limited certain types of job. You are supposed to help with the models, help with the research reports. You are not technically supposed to build your independent reports. But if you are curious to learn, that you might take reference from the research reports of your own firm, क्योंकि उसका तो एक्सेस आपको होता ही है, and you might learn कि कैसे research reports prepare की जाती है, what kind of pointers you keep in mind, and you also learn, pick a few sectors, and you try to prepare reports on your own, और अपनी seniors को जाके दिखाओ कि while gaining experiences, while learning from you, I also got the opportunity to prepare these kind of reports, independent reports, and they might give you opportunity to prepare reports of on your independent reports, and उससे आपका primarily learning opportunities भी बढ़ेगी, as well as secondary तो you are obviously gaining knowledge. Another thing would be if you are working in bigger brands like JP Morgan, Goldman Sachs, or any other similar big brand, you are sitting with प्रीमियम क्लास ऑफ पीपल, क्योंकि यहाँ पे जनरली एवरेज सैलरीज भी बहुत ज़्यादा होती है, एंड यू आर सिटिंग विद पीपल हु हैव ब्रॉड नॉलेज, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू की प्रोसेस भी बहुत स्ट्रिंजेंट होती है, 3-4 राउंड्स होते हैं. सो वाइल हायरिंग पीपल मेक श्योर कि इनके पास सबसे क्रीमी लेयर और अच्छे से अच्छे लोग आ रहे हैं. सो यू आर सिटिंग विद पीपल
who come from very big background, even they might come from IIMs and IITs background. So you are getting the chance to interact with them. You have to fight your approach anxiety and you have to talk to them. उनसे पूछो कि उनका IIM का experience कैसा है, how they got into IIM, how they prepared for their CATs, if you are planning to do MBA after your CA. तो आपके पास तो पूरा एक्सेस है उन लोगों का जो कि अपने आईवी लीग कॉलेजेस से होके आए, जो अपने IIM से होके आए हैं, आपके पास तो उन लोगों का एक्सेस है. So you can gain the benefit from that, and you can also try approaching people from different divisions while you're on lunch. मैं जैसे during my industrial training time मैं क्या करता था, मैं लंच में जाता था and I used to see people who are working from IB. हमारा कैफेटेरिया सेम होता था तो IB वाले लोग भी आते थे, तो I try approaching them. I usually didn't care कि मतलब कि वो क्या सोचेंगे. I just went and say hi and I said like I work in institutional equities team and I just used to try to start a conversation. मतलब जैसे कि जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करोगे, the more and more people you'll talk, the more and more topic you'll find कि किससे आप स्मॉल टॉक्स कर सकते हो, and you might build on relationships with them. और उनसे आप पूछो कि उनका जॉब रोल क्या है, and you figure out कि जो जॉब रोल जैसा वो बता रहे हैं इंटरेस्टिंगली वो तुमको इंटरेस्ट लगता है कि नहीं. एंड इट माइट ऑल्सो हेल्प यू प्लानिंग आउट योर फ्यूचर जॉब रोल्स कि आपको फ्यूचर में कौन सी जॉब स्विच करनी है या कौन से डिपार्टमेंट में जाना है बेसिकली. So that might also be helpful, and that could also be one of the secondary benefits that you could get. And obviously मैंने बोला कि secondary benefits आपको क्या मिलेंगे totally आपके ऊपर dependent है. And the last initial phase of your industrial training, you don't get much work. आपका workload इतना ज़्यादा hectic नहीं होता है because your seniors might be busy at that time. या हो सकता है आप कोई busy season में आए हो, मार्च या quarter end में आए हो, and your seniors are busy and they might to tell you कि you can sit out this quarter, we'll take your help next quarter. Yeah, any scenario could be there. So you can try referring to reports or try referring to the works that your seniors used to do before you, और जो पहले से काम होते आ रहे हैं, you can try referring that and try to learn on your own कि चीज़ें कैसे होती है, and try to get your hands dirty on work basically कि अपने आप independently काम करके देखो कि कितना आपको समझ आ रहा है देख के, and just note down the doubts and try asking your seniors उन doubts के बारे में. This way you can take out every benefit you can from your industrial training जो कि बड़े ब्रांड में आप जाके ले सकते हो. And it totally, the secondary benefits totally depends on you. In any corporate for that matter, you are the junior most employee in the whole company. तो obviously बात है, you will get some number crunching, some manual task जो कि senior employees नहीं करते हैं. And you cannot delegate this work further because you are the last one in the whole employee hierarchy. So you might get some of the manual data crunching jobs. And मेरे को भी मिला था, but what was that, when while I was not doing those jobs, I used to just sit with people of different sectors, people who are working in different divisions, and I used to try to study the reports that these people have prepared, try to upscale my knowledge and try to upscale my skills and learn more and more things जिससे कि मैं और ज़्यादा एफिशिएंसी ला पाऊँ काम में, एंड आई कैन ऐड वैल्यू टू द टीम, ऐड वैल्यू टू द वर्क. एंड दिस इज़ द सिमिलर थिंग दैट यू कैन डू if you wanted to gain every inch of benefit from your industrial training is what I feel. क्या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके सीएस अपनी मेन जो कोर फाइनेंशियल टैक्सेशन और दूसरी नॉलेजेस है जिसके लिए सीए जाने जाते हैं, क्या उससे ग्रिप आपकी छूट जाएगी? सो आई वुड से इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू बिकॉज एट सम पॉइंट इन योर लाइफ विल हैव टू चूज वन फील्ड, और वो वन फील्ड के लिए आपको अलग अलग चीज़ें ट्राई आउट करनी पड़ेगी. सो कंसिडर दिस दैट यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू. एंड एनी वेज कोई आपको एज एक सी ए स्टूडेंट को कोई इसलिए लेगा उसकी नॉलेज के बेसिस पे, जैसे कि यू आर इन योर अर्ली ट्वेंटीज़, एंड जनरली अर्ली ट्वेंटीज़ में किसी को भी इंडेक्स का नॉलेज नहीं होता है जितना एक सी ए स्टूडेंट को होता है. या सी ए स्टूडेंट ने आर्टिकलशिप में जो कि इंडेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो देखे है वो जनरली इतनी अर्ली एज में कोई एक एवरेज ग्रेजुएट नहीं देखता है. सो दिस इज़ वॉट यू आर नोन फॉर, और आपकी इसी नॉलेज को वो लोग लेवरेज करते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे कॉन्सेप्ट्स को और जो प्रैक्टिकल चीज़ आप ऑफिस में कर रहे हो उसको कितना लिंक कर पा रहे हो. एंड आई what I feel is that कि आगे जाके CS का role would be more of financial management and business management, and both of these things are anyways part of your curriculum that you study in your CA finals. Why not try that business development and financial management knowledge while working in a particular company? So I feel कि it is not true कि आप अपनी basic
चीज़ों बेसिक नॉलेज या बेसिक टैक्सेशन नॉलेज से ग्रिप खो जाते हो. इट इज़ जस्ट दैट यू आर मूविंग इन अ मोर स्पेशलाइज्ड फील्ड. जैसे कि इफ़ यू आर वर्किंग इन अ मिड साइज फर्म एंड यू डिसाइड टू मूव ऑन अ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ अ कॉर्पोरेट, दैट यू माइट नॉट गेट अ होल्ड ऑफ टैक्सेशन दैट मच, या रिटर्न फाइलिंग ये सब के लिए अलग से टैक्सेशन डिपार्टमेंट हो, एंड यू आर जस्ट वर्किंग ऑन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल्स, preparing the MIS report, and you are anyways leveraging your knowledge of basic financial statements there. तो आपकी financial statement के लिए knowledge तो anyways बढ़ ही रही है, and you are still in grip with your basic knowledge that you gained during your articleship, during your studies. It's just that you are just gaining specialization. You are just trying out different departments कि आपको कौन सा suit करता है. And I think that there is nothing wrong with that. And anyways, you are getting the exposure कि corporate में कैसे काम करता है ना, और those are different from a normal mid-size CA firm. Now I'll share with you my experience in equity research. So firstly was that ki I was constantly like every once in a while we were having meeting with the company's management, meeting with different funds. तो उससे हमको पता लगता था कि इस तरीके के क्वेश्चंस कोई इन्वेस्टमेंट मैनेजर किसी पर्टिकुलर कंपनी से करता है. तो उससे हम हमारी खुद की नॉलेज बेस बढ़ती है कि हम किसी कंपनी को देखते समय, एनालाइज करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए क्या माइंडसेट रखना है वाइल इन्वेस्टिंग इन दैट सेक्टर, इज व्हाट आई लर्न सिटिंग ऑन डिफरेंट कॉल्स विद द क्लाइंट्स whom we recommend certain stocks. और वो जो क्लाइंट्स हमको क्वेश्चन करते थे कि इस इस स्टॉक में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इस कंपनी में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, सो इट गिव्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि कंपनी को कैसे 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 एनालाइज कर सकते हैं, एंड हाउ ब्रॉडली वी कैन बी क्रिटिकल ऑफ अ कंपनीज परफॉर्मेंस. Every broker and every equity research house have these conferences where you are sitting with the CEOs, CFOs of different companies, different banks, leading banks, and I also got the opportunity to attend one of such conferences which was for BFSI sector, BFSI as in banking sector. तो वहाँ पे I got to meet with CFOs of leading banks like HDFC, Federal Bank. तो उससे most of them were CAs, and I told them that I am doing CA industrial training, and they were happy that a CA student is getting such exposure and he is able to leverage out the opportunity I got. So it was a wonderful experience. Like you get to learn how to talk to these corporates and what questions to ask the management basically while looking at a particular company or a particular stock. Lastly, I would say there are a couple of job descriptions that are not that interesting for CA industrial trainees. You should have your own R&D in place. आपको खुद को R&D करना पड़ेगा. Talk to people who have done industrial training in that job roles. Try approaching them in LinkedIn. Try to get in touch with them और उनसे पूछो, उनसे समझो कि उनका जॉब रोल क्या है और वो इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है तुमको. Try asking them questions कि उनको कैसा लग रहा है वो जॉब रोल में. Are they happy? Are they satisfied? Or are they able to leverage out some primary or secondary benefits that I discussed in this video? And कोई भी जॉब रोल तुम हमारे लिए सारे जॉब रोल्स नहीं है. It depends on us how thoroughly have we research on that particular company, on that particular division, and consciously you have to make decision based on certain factor. It might be कि आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नहीं जमती है. हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. सो जस्ट try to figure out talking to different people and try to understand your preferences, और उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग किसी का पर्टिकुलर कंपनी में अप्रोच करना चाहिए rather than looking at the stipend or the duration or the working hours is what I feel. एंड लास्टली रही बात लीव्स पे, लीव फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, एवरेजली थ्री एंड हाफ मंथ्स होती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की लीव. बट आई हैव सीन केसेस वेयर इंडस्ट्रियल ट्रेनीज डेवलप गुड रिलेशन विद their bosses and they might negotiate one and a half year, one and a half months of leaves more. It totally depends on you कि आप कितना negotiate कर पा रहे हो during your interviews and during your job कि you can leverage out more and more leaves. And if the job role is quite satisfying and it's quite worth it, so I would say कि you can also consider, मतलब I'm not saying कि you should skip your attempt, but you can consider कि whether you should delay your attempt or not. And obviously you'll have to search more, thoroughly search करना चाहिए किसी जॉब रोल के बारे में, thoroughly दूसरे लोगों से पूछना चाहिए जिन्होंने वो जॉब रोल किया कर रखा है, और उनसे पूछना चाहिए कि whether they are getting enough learning from that particular job role or not, and whether they were getting enough time to study or not. After getting answer to those questions, then you should consciously decide whether the particular job role is fit for you or not. So that was it with this video, and I'll keep on coming up with more and more such videos, and
connect with me, and I have dropped my LinkedIn profile in the description, and will surely get in touch, and let's stay connected. Thank you.